separately. And I have also said to you that all the enzymes will have same things. Okay? Active site development हो लेना पर previous class I also told you about the holoenzyme, sapoenzyme, lipoenzyme, those type of growth cofactors and other things. The previous class I have said. In the today's class we will be talking about the classification of enzymes. Classification of enzymes. Classification. Now, classification of the enzyme. Previously, the enzyme has been classified based on their name and based on the place where they are going to represent. But later on, it has been divided into so many categories. The commission which has been divided the enzymes into 6 major classification is the International Union of Biochemistry, that is IUB. Previously, that has been classified based on the nature, based on the presence, and based on the things. There are various categories has been there, but later on they have been classified the classification of the enzymes into 6 major classes by the Committee of International Union of Biochemistry, and they have divided the enzymes into 6 major classes. 6 major classes. Okay? Now the first enzyme classification is the oxidoreductase. जितने भी enzymes है आपके पास, whatever the enzymes are there, they will be falling under these 6 categories only. Depending on the nature of their action, they have divided the enzymes into 6 major categories. If I am talking about the enzyme, I am talking about the biological enzyme. The first enzyme is the oxidoreductase. The word itself representing that there is something related with the oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Oxidizing something. Reduction, if I am talking about the reduction, I must be talking about the removal of H plus ions, majorly, or removal of any kind of elements. Removal of H plus ions. So, oxidoreduction. These oxidoreduction enzymes involved in the oxidation and reduction. That means that any enzyme which will lead into the oxidation of a substance as well as removal of H plus ion from them, leading to the formation of oxidoreductase enzyme. The best example from the glycolysis which has been given that glyceraldehyde 3-phosphate will going to get oxidoreductase with the help of enzyme 3-phosphodehydrogenase. Whenever the term dehydrogenase is going to get come, it is representing the oxidation and reduction of enzyme. जहाँ पे भी word oxidoreductase और जहाँ पे भी term dehydrogenase आएगा, तो वहाँ पे क्या समझा जाएगा? Oxidation हो रहा और reduction हो रहा. The best example क्या दिया? The best example it has been given when the glycolysis was happening. At that it was a level glyceraldehyde 3-phosphate going to get oxidized with the help of 3-phosphodehydrogenase, and after oxidizing there was a removal of H plus ion where the NADH will going to convert into the NAD is going to convert into the NADH. That means that 3-phosphodehydrogenase enzyme, it is not only oxidizing the glyceraldehyde 3-phosphate, but is also doing the reduction activity by removing of H plus ion. And after doing the oxidoreductase type of activity, glyceraldehyde 3-phosphate is going to convert it into 1,3-bisphosphoglycerate.
बात समझ में आई आपको? Glyceraldehyde 3-phosphate, it is going to get oxidized with the help of 3-phosphodehydrogenase. 3-phosphodehydrogenase, glyceraldehyde 3-phosphodehydrogenase, it is a type of enzyme. It is working on the glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Dehydrogenase जाकर ही आप टर्म पढ़ेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडाइज भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा. व्हाट डू यू मीन बाय द रिडक्शन? रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ H plus ion. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज glyceraldehyde 3-phosphate, it is oxidizing as well as it is getting removal of H plus ion. So which enzyme is responsible for turning the glyceraldehyde 3-phosphate to the 1,3-bisphosphate? It is a 3-phosphodehydrogenase. So 3-phosphodehydrogenase is the best example for oxidoreductase type of enzyme. कोई भी ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडाइज भी करता, रिड्यूस भी करता, वो से टाइप के एंजाइम को आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडोरेडक्टेज. ओके, there are a lot of examples out there. I have given only the one. Now coming to the second type of classification, it is the transferase. The word itself representing, it is something related to the transferring of material. Transferring. What is बता रहा उसका कि it is something related to the transferring of things. Now enzyme that catalyze the transfer of functional group. Transfer of functional group. Now one more example has been given that when the glucose is going to turn in the glucose 6-phosphate, the phosphate has transferred from the ATP and it has been donated to the glucose and turned that molecule into the glucose 6-phosphate. The functional group here is the phosphate which has been get transferred from the ATP to glucose. समझ में आई बात? हेक्सोकाइनेज. ट्रांसफरेज का बेस्ट एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज. What is the role of the hexokinase? It will going to transfer the functional group from the one component to the another component. The component was ATP. Okay, the component was ATP. From the ATP, the functional group phosphate has been transferred to the glucose and turned that molecule into the glucose 6-phosphate. अब आपको बताने की जरूरत नहीं है ग्लूकोज 6-phosphate को ग्लूकोज 6-phosphate क्यों बोलते हैं, बिकॉज एट द 6th पोजीशन द फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट. ठीक है, so they are transferring the functional group. That's the reason the hexokinase enzyme will fall under the category of transferase. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मालूम है? ADP एक प्रोडक्ट है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फॉस्फेट है. फॉस्फेट ATP से लेके अगर ग्लूकोज को ट्रांसफर करे तो ट्रांसफर करे कैसा होगा ना? बात समझ में आई आपको? ATP से लेके ग्लूकोज को ट्रांसफर करे आप फॉस्फेट ग्रुप, तो ये जो एक्टिविटी हुई, ये एक्टिविटी को क्या बोलेंगे आप? ट्रांसफरेज. तो ट्रांसफरिंग द फंक्शनल ग्रुप and turning that molecule into the glucose 6-phosphate. The enzyme which is responsible to the hexokinase which come under the category of transferase. ठीक है, can I move forward? कहानी आया समझ में? Next is the hydrolase. Hydrolases. Now bring about the hydrolases of various compounds by the addition of water. आप previous classes में आप पढ़े, जब कभी भी अपने को बॉन्ड बनाना होता तो बीच में से अपन वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते. ठीक है, जब कभी भी आपको बॉन्ड बनाना होता तो वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देते, तो बॉन्ड बनता बीच के अंदर. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप प्रीवियस क्लासेस में देखे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों जब जुड़ रहे हैं, when they are getting attached, in between the water molecules are getting lost. That means that if the water molecule is going to get lost, the bond is going to get formed and the two molecule is going to get attached. ये बात understood है? ठीक है, ये बात understood है.
जब दो मॉलिक्यूल को आपको ज्वाइन करना है तो उनके बीच में से आप वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हो। बेसिक फिनोमेना इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न। अब यही वाइस वर्सा अगर करें आप कोई वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करें तो व्हाट विल गोइंग टू गेट हैपन, दे आर अगेन गोइंग टू गेट सेपरेटेड। दैट्स द रीजन इट्स एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोलाइसिस। Hydrolysis, that means that when the addition of water molecule is going to get happen, the molecule is going to get separated. When the addition of water molecule is going to get happen, the molecule is going to get separated. When you want to join the two molecules, the water molecule is going to get eliminated. जब दो स्ट्रक्चर को मिलाना है, जब दो स्ट्रक्चर को मिलाना है, if you want to add the two structures, दो स्ट्रक्चर्स को मिलाना है, तो ये बीच में जो बॉन्ड बनता यहाँ पे से वाटर मॉलिक्यूल निकला कर बनता। प्रीवियस क्लासेस में अपन पढ़े इसके बारे में, ठीक है। If you want to attach the two molecules, a sugar molecule, for an example, the water molecule is going to get lost and the two molecules are going to get attached. If you want to remove the two molecules, if you want to separate the two molecules, that means that you need to add the water molecule so that they can get separated. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया A plus B, A एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एग्जाम्पल के जैसा बताया गया, A और B एक एग्जाम्पल के जैसा है, ठीक है। A और B एग्जाम्पल के जैसा लिया, A और B दोनों अगर मिले हुए हैं तो they have been attached, ठीक है। If you are going to add that H2O, that is water, H2O is the water. If you want to separate it, then you can see the separation, not the separation. दो H थे, एक H ले लिया, एक H ले लिया, एक ऑक्सीजन था, एक ले लिया। So that means that whenever we want to add two molecules, attach the two molecules, in between the water molecule is going to get lost. If you want the two molecules to get separated, you will add up the water. Those kind of activity is called as a hydrolysis. ठीक है? So bringing about the hydrolysis of various compound by the addition of water. समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही बात है, very easy. जब दो मॉलिक्यूल को जुड़ाना है, बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जब दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो सेपरेट हो जाएगा। जी, A plus B एक मॉलिक्यूल है। नहीं, हाँ बोल सकता, A plus B एक मॉलिक्यूल है। आपको समझाने के लिए प्लस का साइन है बीच में, तो A भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। A plus B मतलब A अलग मॉलिक्यूल, B अलग मॉलिक्यूल नहीं है। आपको समझ में आना पड़ता है A plus B है, A B है, ठीक है जी। एनालिसिस कैटालिसिस साइन नहीं आता उसमें, क्या कभी भी मॉलिक्यूल ऐड करें प्लस एंड माइनस साइन आता है। हां, जोड़ना है तो पानी निकल जाता है। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट, वो अलग फिनोमेना। आप बात करेक्ट है, बट एट दिस लेवल वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ एंजाइम, वी आर नॉट गोइंग द इलेक्ट्रॉनिक चेंज, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, साइन आना चाहिए। नाउ द सेकंड, द फोर्थ मॉलिक्यूल इज द लाइसिस, LYASIS. Now, in the hydrolysis, there will be the involvement of the water molecule for removing a sugar bound. But in cases of the lysis type of enzyme, they don't require any kind of special water molecule or any other substances to differentiate between the two products. यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? Hydrolysis में, in the hydrolysis, the water molecule should be there in order to separate the molecule. But in cases of the lysis, if water molecule is not there also, even though the enzyme it is having the potential to separate the molecule into two different parts. The best example is the fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate has been divided into glycerol T-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Glycolysis का step. ठीक है? Here the enzyme which is responsible, it is the aldolase. Aldolase. Now what this aldolase enzyme is doing? Without help of any substances, without help of water, without help of any other substances, even though it is separating the molecule into
2 equal half. Previous में hydrolysis में you need to have the involvement of the water for the separation, but in the lysis no. Even though if the water is absent, the enzyme can have the potential to separate into 2 different halves. The enzyme is having the potential to separate into 2 different halves. That's the difference between the lysis and the hydrolase. So the best example is the fructose 6-phosphate that has been divided into glycerol 3-phosphate DHA. क्या बताना चाह रहे हैं आप ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ तो चुना सेपरेट होते, लेकिन लाइसिस एंजाइम में वाटर मॉलिक्यूल नहीं भी रहा, कोई सब्सटेंस नहीं भी रहा, तो भी उन लोग सेपरेट हो सकते। तो कौन सा एंजाइम है? एल्डोलेज। एल्डोलेज ऐसा एंजाइम है जो डिवाइड करता ग्लिसरॉल 3-phosphate DHAP that has been arrived from the fructose 6-phosphate। अभी मैं ग्लाइकोलाइसिस का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लिया ऑलरेडी, लिप्सी में समझ जाना। ओके, तो द नेक्स्ट कैटेगरी इज द आइसोमरेज। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोमरेज? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इजंट इट? आइसोमर्स हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इस बारे में। द प्रीवियस क्लास आई सेड यू दैट आइसोमर्स आर नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ each other. They are mirror image of each other. The best example for the isomerase type of enzyme, again you can able to see the glycolysis enzyme. The fructose 6-phosphate, when they have been turned up into 2 different molecules, glycerol 3-phosphate and DHAP, dihydroxyacetone phosphate, they can be these glycerol 3-phosphate DHAP. I have said to you that when I was teaching you the glycolysis, glycolysis पढ़ा रहा था आपको, वो मैंने बोला the glycolysis will move from the glycerol 3-phosphate. They will not going to move from the DHAP. If they want to move from the DHAP should convert into the glycerol 3-phosphate. Then only they can contribute the glycolysis cycle. बात समझ गए आपको? हम जब आपको glycolysis पढ़ा रहे थे, at that time I have said to you that when the glycolysis cycle will move to the, if they want to move in a particular direction, अगर उन लोगों को एक डायरेक्शन में मूव करना है तो फ्रक्टोज 6-phosphate 2 में स्प्लिट होता, ठीक है? ग्लिसरॉल 3-phosphate डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। जब कभी भी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनता तो वो टाइम में ग्लाइकोलाइसिस इधर से कंटिन्यू नहीं होता, ग्लिसरॉल 3-phosphate से कंटिन्यू होता। अगर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को भी अगर साइकिल में लाना है तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल 3-phosphate में कन्वर्ट होना पड़ता। तो द ग्लिसरॉल 3-phosphate and DHAP, glycerol 3-phosphate and DHAP, these are the isomers for each other. These are the isomers of each other. That means that glycerol 3-phosphate can convert into DHAP and DHAP can convert into the glycerol 3-phosphate. जी? Yes, glucose 6-phosphate can also be turned up. Very good. Isomer है वो भी, बहुत अच्छा है। ठीक है? Glycerol 3-phosphate can turn up into why can say why is set the example of the glycerol glucose 6-phosphate to the fructose 6-phosphate, because both are hexose sugar, दोनों भी hexose sugar। ऐसे शुगर्स जिसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा, फॉर्मूला सेम है, तो इस चीज को आप आइसोमर बोलते हैं। C6H12O6 का फॉर्मूला ओबे करते हो ना, फ्रक्टोज हो या फिर ग्लूकोज हो, they will obey the formula of C6H12O6. Structural formula it is same, configuration is different. In the same way, the isomers, these are G3 that is glycerol 3-phosphate DHAP, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो आइसोमरेज इट इज one type of enzyme which can turn the DHAP into the glycerol 3-phosphate or glycerol 3-phosphate into the DHAP. So those kind of enzymes which will be acting as an isomeristic activity, then it will be called the category of isomerase. Okay? Isomers का example नहीं है, like इसमें hydrolysis है, isomerase है, which और दूसरे भी है। आप ये इसी याद करता बोल के मैं ये आप दूसरे भी देख सकते, दूसरे भी है। ये ग्लाइकोलाइसिस का मैं बार-बार एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ग्लाइकोलाइसिस कोई नई चीज़ नहीं है आपके, ऑलरेडी पढ़ के। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं भी आया तो कोई भी अगर आप नोट्स के तौर पे भी देखें तो आपको समझ में आ जाता है कुछ चीज़ क्या हो रहा है। ठीक है ना? द लास्ट टाइप ऑफ एंजाइम इट इज अ लाइगेज।
Now enzyme catalyzing the synthetic reaction where two molecules are joined together and ATP is used. Now in the previously we are only talking about the hydrolysis, ligases, where the two molecules are getting separated. Okay? Now if the two molecules are joining together, one example, L-glutamate plus ammonia. There are two different molecules are there. L-glutamate एक different molecule है, ammonia एक different molecule. L-glutamate एक अलग molecule है, ammonia एक अलग molecule. दोनों जुड़ने के दौरान while they are joining together, in between they are using the ATP. बात समझ में आई? When they are joining together, ऐसे molecule, when they are joining together and in between them, if they are using the ATP and new products are getting formed, those kind of enzymes is called as a liganase. ऐसा एंजाइम जो दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर रहा with the help of ATP, with the involvement of the ATP, then those kind of enzymes will be falling into the category of liganase. What they are trying to say is L-glutamate, ये एक अलग कंपाउंड है L-glutamate. इसके साथ अगर अमोनिया जुड़ा, if they have attached ammonia along with this, L-glutamate had attached to the ammonia, and while they are getting attached, if ATP has been converted into the ADP, that means that they have utilized the ATP energy to form the new product L-glutamine. Then those kind of enzyme which is involving in this, those kind of enzyme what's it called? दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के दौरान अगर ATP एंजाइम यूज करा, दो मॉलिक्यूल को XYZ एंजाइम ले लो, ठीक है, दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर रहा हूँ और in between that the ATPs are getting utilized, so those kind of enzymes will fall under the category of liganase. ये अलग कंपाउंड है L-glutamate, अलग कंपाउंड है अमोनिया एक कंपाउंड है, यस, ठीक है, दो अलग-अलग चीजें हैं. ये दो अलग-अलग चीजों को जब जुड़ा रहा हूँ और बीच में ATP इन्वॉल्व हो रहा और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा, तो बीच में जो एंजाइम रहेगा वो एंजाइम को क्या बोलेंगे? लाइगेज. वेरी सिंपल, ठीक है. So the first enzyme which they have been read is the oxidoreductase. So they are involving in the oxidation and the reduction type of activity. If I am talking about the reduction, I am also talking about the H+ ion, removal of the H+ ion. Second category is the transferase. The functional group, if it is transferring from one molecule or attaching to another molecule, is called as a transferase. बहुत सारे एंजाइम्स है ट्रांसफरेज में. यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही एग्जांपल. थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी इट इज द हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस, द वर्ड इज फॉर हाइड्रोलाइसिस, तोड़ना. किसके जरिए? फ्रॉम द हेल्प ऑफ व्हिच थिंग? वाटर. इफ द वाटर इज गेटिंग इन्वॉल्व एंड टू मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग सेपरेटेड, वी विल कॉल इट एज द हाइड्रोलाइसिस. Ligases, without helping of water, without helping of any other substances, even though the enzyme having the potential to break the molecule, break the substrate into the two different parts, then it will be cutting into the ligases. Isomerase, mirror image of each other. Okay? Ligases, two molecules are joining together with the help of ATP, and those kind of enzymes will fall in the category of ligases. Okay? Are you clear? Yes, sir. ठीक है, पूछिए किसी को. You don't need